मिलिया उर्दू प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबाजोगाई में हमेशा से शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक जैसे विषयों पर एक्टिविटीज का आयोजन किया जाता रहा है। हाल ही में 18 दिसंबर जागतिक अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर स्टूडेंट असेंबली का आयोजन इसी विद्यालय द्वारा किया गया था, जिसके बाद प्रशासन और कई संस्थाओं द्वारा मिलिया विद्यालय के विद्यार्थियों का सम्मान किया गया था। फिर से एक बार मिलिया प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबाजोगाई द्वारा दिनांक 13 फरवरी मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन विद्यालय में किया गया, जिसमें 150 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लेकर तरह तरह के वैज्ञानिक साहित्य की जानकारी दी। इसी के साथ स्कूल के छोटे छोटे विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक गैलरी लगाई, जिसमें कई पुराने समय के वैज्ञानिकों की जानकारी देते हुए विज्ञान क्षेत्र में वैज्ञानिकों का योगदान किस तरह रहा, इस बारे में बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुत किया। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष के स्थान पर डाइट के प्राचार्य डॉक्टर नदाफ थे और विशेष अतिथियों में पत्रकार AR पटेल, समाज सेवक शेख रमीज, पत्रकार शेख वाजिद, एडवोकेट इस्माइल गौली, हिफाजत पठान, अमजद पठान आशियाना, अकबर पठान, शेख जफर, पत्रकार ताहिर चाउस मौजूद थे। इसी के साथ मिलिया विद्यालय की ओर से सभी अतिथियों का फूल देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्राथमिक मुख्याध्यापक शेख जमील, माध्यमिक के मुख्याध्यापक इरशाद अंसारी के साथ शिक्षकों में से मिसबाउद्दीन सिद्दीकी, शेख नदीम, शाहिद सर, अध्यापक अध्यापिका मौजूद थे। विद्यालय में बाहर से आए हुए सभी अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Zubair Muhammad Talha. I study in 9th class. My topic name is Chandrayaan 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Pathan Shazim. I am studying in 9th class. My topic name is Chandrayaan 3 also. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sayyid Arshia Shakir. I am studying 9th class. My topic name is Vikram Lander. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Arab Muniba Muhammad. I study in 9th class. My topic name is Pragyan. The Chandrayaan 3 was launched using the LVM-3 rocket circuit system. LVM-3 is new launch vehicle of ISRO with capability to place the models into cost effective manner. Objective of the Chandrayaan 3 is launched by Mission R, soft and safe landing. It has waited for 1 month and it landed at around 69.36 seconds and 32.34 ETH. The Vikram lander was responsible for a soft landing on the moon. It is also box shaped with 4 landing legs and 4 landing thruster capable of. The primary task of Vikram lander is to make a soft landing on the moon surface near the South Pole region and Pragyan rover. As per the ISRO, the Vikram lander was considered 3 payloads for its objectives. Pragyan is a lunar rover that is a part of Chandrayaan 3, a lunar mission developed by the Indian Space Research Organisation. A previous iteration of the rover was launched as a part of Chandrayaan 2 on 22 July 2019 and it was destroyed with its lander Vikram when it crashed on moon on 6 September. On 14 July 2023, Pragyan and Vikram is again launched with Chandrayaan 3 and it successfully landed near the lunar South Pole on 23 August 2023 and making India the 4th country to do so. It highlights India's progress in space exploration and will contribute further to our understanding of the moon's geology and the environment. It is designed to operate on the solar power. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sayyid Huda Shukur from 8th standard. I want to explaining about solar system. There are 8 planets in our solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. All planets revolve the sun. Sun is our star. Mercury is the smallest planet in our solar system. Venus is the hottest and brightest planet in our solar system. Earth is a blue and beautiful planet and that have life inside. Mars is the red planet and that has volcanoes inside. Jupiter is the biggest planet and that have cyclones inside. Saturn have rings. Saturn made of millions of dust and icy chunks. Uranus an icy planet and it rotates on its side. Neptune is the farthest planet from the sun. Thank you. My name is Sheikh Laiba Said. I am studying 9th class. My project topic is hemodialysis.
My project topic is hemodialysis. The scientist William Koch developed hemodialysis in 1943. Hemo means blood and dialysis means filtration. It means filtration of blood. The efficiency of kidneys can be adversely affected by injury, infection or decreased blood supply. In case this happens, an excess of toxic substances accumulates in the body. It can lead to death. If kidneys fail, nitrogen is waste. With the help of this machine, with the help of man machine, the process of separating nitrogen is waste with the help of this machine is called dialysis. About 500 milliliter blood is sent one time through this machine. Purified blood is then fused into the body of the patient. Thank you.